Dear students, today's topic is Strong Roots by APJ Abdul Kalam. Abul Pakir Zainal Abidin Abdul Kalam, who was born in 1931 and died in 2015. He was one of the pioneers of aerospace engineering in India. For a major part of his life, he worked as a scientist in Indian space programs. Some of his famous works are India 2020, Ignited Mind, Wings of Fire. He was the President of India from 2002 to 2007. Strong Roots is an extract from Dr. Kalam's autobiography, Wings of Fire. In this extract, he talks about his childhood in his hometown. The piece presents a delightful sketch of the author's early life and the development of his spiritual growth. आइए अब चैप्टर को शुरू करते हैं. I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरी पैदाइश एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में एक आइलैंड टाउन रामेश्वरम में हुई जो पुराने मद्रास स्टेट में था. आज उसका नाम तमिलनाडु है. My father Zainal Abidin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. मेरे वालिद जैनुल आबिदीन, उनके पास ना ही फॉर्मल एजुकेशन था, ना ही ज़्यादा दौलत थी. इन चीज़ों के नहीं होने के बावजूद भी he possessed great innate wisdom. उनके अंदर एक पैदाइशी जहानत थी, अक्लमंदी थी, and a true generosity of spirit, और सखावत थी. हकीकी मानों में जो रहमदिली और सखावत होती है वो उनके अंदर थी. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiyamma. I do not remember the exact number of the people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiyamma. मेरे वालिद के लिए एक बहुत ही आइडियल मददगार जो थी वो मेरी माँ थी, अशयम्मा. आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, कि हर रोज़ वो कितने लोगों को खिलाया करती थी. लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल ये सर्टेन हूँ कि बाहर के लोग जो है वो ज़्यादा हुआ करते थे हमारे घर के लोगों से, जिनको वो रोज़ाना खाना खिलाया करती थी. My parents were widely regarded as an ideal couple. My mother's lineage was the more distinguished one. One of her forebears having been bestowed the title of Bahadur by the British. मेरे वालिदैन जो थे वो बड़े मशहूर थे आइडियल कपल के तौर पर. मेरी माँ जो है, माई मदर्स lineage, उनका जो lineage था, उनके आबा अजदाद का जो ताल्लुक़ था, was the more distinguished, वो ज़्यादा इम्तियाजी था, ख़ास था. One of her forebears having been bestowed the title of Bahadur by the British. उनके बाप दादा में से किसी एक को ब्रिटिश के ज़रिया बहादुर के खिताब से भी नवाजा गया था. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. अब्दुल कलाम ये कहते हैं, मैं अपने लंबे और ख़ूबसूरत वालिदैन के कई बच्चों में से एक छोटा सा मामूली दिखने वाला बच्चा था. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and bricks on the Mosque Street in Rameswaram. We lived in our ancestral house.
हम लोग अपने आबा अजदाद के घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो बनाया गया था 19th सेंचुरी के मिडिल में। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस। ये अच्छा खासा एक बड़ा पक्का घर था, मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक्स, जो चूना पत्थर और ईंट से बनाया गया था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम के मॉस्क स्ट्रीट में। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothing. In fact, I would say mine was a very secure childhood, materially and emotionally. मेरे जो सादा एक सिंपल ज़िंदगी गुजारने वाले फादर जो थे, वो बचा करते थे गैर ज़रूरी राहत और सुकून, ऐश व आराम की चीज़ों से। However, all necessities were provided for. हालांकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब मुहैया थी, in terms of food, medicine और clothing, जैसे खाना, दवाइयाँ, कपड़े, जो ज़रूरी चीज़ें वो मुहैया थी। In fact, I would say mine was a very secure childhood. हकीकत में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपना था वो बहुत ही सिक्योर था, बहुत ही महफूज था, मेटेरियली एंड इमोशनली। मेटेरियली भी और इमोशनली भी। मेटेरियली कहने का मतलब जो ज़रूरत की साथ चीज़ें हैं वो उस हिसाब से भी, और इमोशनली इस तरह से भी कि प्यार मोहब्बत भाई बहनों का, माँ बाप का जो मिलना था वो मुझे मिलता था। I normally ate with my mother, sitting on the floor on the kitchen. She would place a banana leaf before me, on which she then ladled rice and aromatic sambar, a variety of sharp homemade pickle, and a dollop of fresh coconut chutney. मैं आमतौर पर I normally ate with my mother. मैं आमतौर पर अपनी माँ के साथ खाता था। Sitting on the floor of the kitchen, किचन के फर्श पे बैठकर। She would place a banana leaf before me. वो मेरे सामने केले का पत्ता रख देती थी, on which जिस पर she then ladled rice and aromatic sambar, जिस पर वो बड़े से चम्मच से चावल डाल देती थी, खुशबूदार दाल डालती थी, a variety of sharp homemade pickle, और मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े तीखे घर के बने हुए अचार, और एक डॉलप, एक लुकमा, एक लोंदा ताज़ा कोकोनट का चटनी डाल दिया करती थी। The Shiva temple, which made Rameswaram so famous to pilgrims, was about a 10 minutes walk from our house. शिवा टेम्पल, जिसने रामेश्वरम को बहुत मशहूर बना दिया था पिलग्रिम के दरमियान, तीर्थ करने वालों के दरमियान, वो मेरे घर से बस 10 मिनट के पैदल चलने की दूरी पर था। Our locality was predominantly Muslims, but there were quite a lot of Hindu families too, living amicably with their Muslim neighbors. There was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayers. हमारा जो मोहल्ला था वो उसमें ज़्यादातर मुस्लिम थे, लेकिन there were quite a lot of Hindu families too. वहाँ अच्छा खासा हिंदू फैमिली भी थे, लिविंग एमिकेबली विद देयर मुस्लिम नेबर्स, जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे। देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क इन आवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर्स, जहाँ मेरे वालिद मुझे लेकर जाते थे शाम की इबादत में। I had not the faintest idea of the meaning of the Arabic prayers chanted, but I was totally convinced that they reached God. When my father came out of the mosque after the prayers, people of different religions would be sitting outside waiting for him. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था उस अरबिक प्रेयर का
जो पढ़ा जाता था, बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड, लेकिन मैं बिल्कुल कन्विंस था, बिल्कुल इस बात का मुझे यकीन था दैट देयर इज गॉड, कि ये जो पढ़ा जा रहा है ये गॉड तक पहुंचता है, अल्लाह तक पहुंचता है। When my father came out of the mosque, जब मेरे वालिद मस्जिद से बाहर निकलते थे आफ्टर द प्रेयर, नमाज के बाद, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स वुड बी सिटिंग आउटसाइड, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बैठे होते थे बाहर, वेटिंग फॉर हिम, उनका इंतज़ार करते हुए। Many of them offered balls of water to my father, who would dip his fingertips in them and say a prayer. This water was then carried home for invalids. I also remember people visiting our home to offer thanks after being cured. Father always smiled and asked them to thank Allah, the Merciful. Many of them offered balls of water to my father. बहुत सारे लोग उनमें से मेरे फादर के सामने पानी का प्याला बढ़ाते थे, who dip his fingertips in them, जो अपनी उंगलियों के ऊपरी हिस्से को पानी में डाल देते थे और दुआएं पढ़ते थे। This water was then carried home for invalids. इस पानी को फिर वो लेकर चले जाते थे invalids के लिए, बीमार लोगों के लिए। I also remember people visiting our home. मुझे ये भी याद है कि लोग आते थे हमारे घर to offer thanks, शुक्रिया अदा करने के लिए, after being cured, जब वो ठीक हो जाते थे। Father always smiled and asked them. वालिद अब अक्सर जो है वो मुस्कुराते थे और कहते थे उन लोगों से टू थैंक अल्लाह, कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, द मर्सीफुल, जो बड़ा मेहरबान है। The high priest of Rameswaram temple, Paksi Lakshmana Sastri, was a very close friend of my father's. One of the most vivid memories of my early childhood is of the two men, each in traditional attire, discussing spiritual matters. जो रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रीस्ट थे, पाक्सी लक्ष्मणा शास्त्री, वो मेरे वालिद के बहुत ही करीबी दोस्त थे। One of the most vivid memories of my early childhood, मेरे शुरुआती बचपने के जो बहुत ही तफसीली अगर कोई याददाश्त मेरे पास बाकी है तो वो ये कि ये जो दो लोग हैं, दोनों अपने रिवायती लिबास में डिस्कस करते रहते थे मजहबी बातों को। When I was old enough to ask question, I asked my father about the relevance of prayer. My father told me there was nothing mysterious about prayer. Rather, prayer made possible a communion of the spirit between people. जब मैं इतना बड़ा हुआ कि मैं सवाल पूछ सकता, मैंने अपने फादर से पूछा कि इबादत का क्या ताल्लुक़ है हमारी ज़िंदगी से। My father told me there was nothing mysterious about prayer. मेरे फादर ने कहा कि इसमें कोई राज की बात नहीं है, बल्कि ये तो एक कम्युनियन है, रूहों को एक दूसरे से जोड़ता है। When you pray, he said, you transcend your body and become a part of the cosmos which knows no division of wealth, age, caste or creed. When you pray, उन्होंने कहा जब इबादत करते हैं, you transcend your body, आप अपने बॉडी के हुदूद से बाहर निकल आते हैं, and become a part of the cosmos, और पूरी कायनात का एक हिस्सा बन जाते हैं, जो which knows no division of wealth, age, caste or creed, जो कोई फ़र्क नहीं समझता दौलत का, उम्र का, जात पात का, नस्ल का। My father could convey complex spiritual concepts in very simple down to earth Tamil. He once told me in his own time, in his own place, and what he really is, and in the stage he has reached, good or bad. Every human being is a specific element within the whole of the manifest divine being. So why be afraid of difficulties, sufferings and problems? When trouble come, try to understand the relevance of your suffering. Adversity always presents opportunities for introspection. मेरे वालिद कम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट को बहुत ही सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल में, बहुत ही मामूली तमिल ज़बान में
बयान कर देते थे। He once told me, उन्होंने एक दफ़ा मुझसे कहा कि कोई भी शख्स in his own time, in his own place, in what he really is, कोई भी शख्स अपने वक्त पर, अपने जगह में जो कुछ भी वो है, and in the stage he has reached, और जिस स्टेज पे वो पहुंच गया है, चाहे अच्छा है या बुरा है, every human being is a specific element within the whole of the manifest divine being. एक मैनिफेस्ट हर तरह मौजूद एक जो मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग है उसका एक हिस्सा है। सो व्हाई बी अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज? जब वो डिवाइन बीइंग का हिस्सा है तो क्यों उससे डरना? परेशानियों से, मुश्किलात से, प्रॉब्लम से। वो कहते हैं व्हेन ट्रबल कम, जब मुश्किल आए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेवेंस ऑफ योर सफरिंग, तो समझने की कोशिश करो कि हमारा क्या ताल्लुक उस सफरिंग से, क्यों ये सफरिंग है हमारे। क्योंकि वो कहना चाहते हैं एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट, ये जो एडवर्सिटी आती है, मसले जो आते हैं, परेशानियां जो आती हैं, ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज, ये हमें मौका देती है फॉर इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को जांचने का। Why don't you say this to the people who come to you for help and advice? I asked my father. He put his hand on my shoulders. I looked straight into my eyes. For quite some time he said nothing, as if he was judging my capacity to comprehend his words. Why don't you say this to the people? अब क्यों नहीं कहते ये बात उन लोगों को who come to you for help and advice, जो आपके पास आते हैं मदद के लिए और मशवरे के लिए। I asked my father. मैंने अपने फादर से बात पूछा। He put his hand on my shoulders. उन्होंने अपना हाथ मेरे कांधे पे रखा। I looked straight into my eyes. और मेरी आंखों में सीधा देखा। For quite some time he said nothing. अच्छा खासा देर तक वो कुछ नहीं बोले। ऐसा लग रहा था as if he was judging my capacity. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरी सलाहियत का अंदाजा लगा रहे थे। Then he answered in low, deep voice. His answer filled me with a strange energy and enthusiasm. Whenever human beings find themselves alone, as a natural reaction, they start looking for company. Whenever they are in trouble, they look for someone to help them. Whenever they reach an impasse, they look to someone to show them the way out. Then he answered in a low, deep voice. फिर उन्होंने एक बहुत ही हल्की गहरी आवाज के साथ जवाब दिया। His answer filled me with a strange energy and enthusiasm. उनके जवाब ने मुझे एक अजीब व गरीब कुव्वत और जोश खरोश से भर दिया। Whenever human beings find themselves alone, as a natural reaction, they start looking for company. जब कभी इंसान अपने आप को अकेला पाता है, एक कुदरती रिएक्शन, एक रद्द अमल के तौर पर वो तलाश शुरू कर देता है अपने साथी की। Whenever they are in trouble, जब कभी वो परेशानी में होते हैं, they look for someone to help, वो किसी की तलाश करते हैं मदद के लिए। Whenever they reach an impasse, they look to someone to show them the way out. जब कभी वो ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां फैसला करना मुश्किल होता है, तो उस वक्त वो तलाश करते हैं किसी ऐसे शख्स की जो उसे उस मुश्किल रास्ते से, उस मुश्किल घड़ी से निकाल दे। Every recurrent anguish, longing and desire find its own special helper. For the people who come to me in distress, I am but a go-between in their effort to propitiate demonic forces with prayers and offerings. This is not correct approach at all and should never be followed. One must understand the difference between a fear-ridden vision of destiny and the vision that enables us to seek the enemy of fulfillment within ourselves. Every recurrent anguish, longing and desire
find its own special helper. बार बार उठने वाली हर एक जहनी परेशानी, चाहत, ख्वाहिश अपना एक खास मददगार की तलाश करता है, ढूंढता है. For the people who come to me in distress, और वो लोग जो मेरे पास आते हैं अपनी परेशानियों में, I am but a go-between in their effort to propitiate demonic forces with prayers and offering. मैं बस उनके और उनकी वो कोशिश जिसमें वो डेमोनिक फोर्सेस को खुश करने की कोशिश करते हैं, उनके दरमियान आ जाता हूं अपनी दुआओं और अपनी इबादतों के साथ. दिस इज नॉट ए करेक्ट अप्रोच एट ऑल. ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है एंड शुड नेवर बी फॉलोड, और इसको फॉलो भी नहीं किया जाना चाहिए. वन मस्ट अंडरस्टैंड, किसी को भी ये बात समझ लेनी चाहिए, द डिफरेंस बिटवीन अ फियर रिडन विजन, फर्क किसके दरमियान, अ फियर रिडन विजन ऑफ डेस्टिनी, किस्मत का डर से भरा नजरिया, एंड द विजन, और वो नजरिया दैट इनेबल्स अस, जो हमें इस लायक बनाता है, टू सीक द एनिमी, कि हम ढूंढ ले उस दुश्मन को, और फुलफिलमेंट विद इन आवरसेल्फ, कामयाबी के रास्ते में हायल दुश्मन को ढूंढ लें जो हमारे अंदर होता है. I remember my father starting his day at 4 a.m. by reading the namaz before dawn. After the namaz, he used to walk down to a small coconut grove we owned about 4 miles from our home. He would return with about a dozen coconuts tied together, thrown over his shoulder, and only then would he have his breakfast. This remained his routine even when he was in his late 60s. मुझे याद है मेरे फादर दिन की शुरुआत करते थे सुबह 4 बजे, डाउन से पहले, सुबह होने से पहले वाली नमाज पढ़ के. आफ्टर द नमाज he used to walk down to a small coconut grove. नमाज के बाद वो पैदल जाया करते थे एक छोटे से कोकोनट ग्रुप में, वी ओन्ड, जो हमारा था, about 4 miles from our home, जो तकरीबन हमारे घर से 4 मील की दूरी पे था. He would return with about a dozen coconut tied together, thrown over his shoulders, and only then would he have his breakfast. वो वापस आते थे तकरीबन डजन कोकोनट को एक साथ बांधकर अपने कांधे पर लटका के लेकर आते, और तब फिर जो जाकर वो नाश्ता करते थे. दिस रिमेन्ड हिज रूटीन इवन व्हेन ही वाज इन हिज लेट 60s. और ये रूटीन उनका रहा उस वक्त तक जब वो लेट 60s के हो गए. I have throughout my life tried to emulate my father in my own world of science and technology. I have endeavored to understand the fundamental truths revealed to me by my father and feel convinced that there exists a divine power that can lift one up from confusion, misery, melancholy, and failure, and guide one to one's true place. And once an individual severs his emotional and physical bond, he is on the road to freedom, happiness, and peace of mind. I have throughout my life tried to emulate my father in my own world of science and technology. मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कोशिश की अपने फादर को इमुलेट करने की, उनकी नकल करने की, in my own world of science and technology. मेरी एक अपनी जो दुनिया थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसमें I have endeavored to understand, मैं कोशिश कर चुका हूँ to understand the fundamental truth, समझने की उस बुनियादी सच्चाइयों को रिवील टू मी, जाहिर किया गया बाय माई फादर, मेरे फादर के जरिए, एंड फील कन्विंस्ड, और इस बात को बिल्कुल मान गया दैट देयर एग्जिस्ट अ डिवाइन पावर, के वजूद है एक डिवाइन पावर का, खुदा का, दैट कैन लिफ्ट वन अप फ्रॉम कन्फ्यूजन, जो किसी को भी उठाता है उसके कन्फ्यूजन से ऊपर, मिजरी, परेशानियों से ऊपर,
मेलनकॉली उदासियों से ऊपर, एंड फेलियर और नाकामियों से ऊपर, एंड गाइड वन टू वंस ट्रू प्लेस, और रहबरी करता है किसी को भी उसके सही मकाम तक. एंड वंस एन इंडिविजुअल सीवियर हिज इमोशनल एंड फिजिकल बॉन्ड, और एक दफ़ा कोई शख्स अगर तोड़ देता है अपने जज्बाती और जिस्मानी जो ताल्लुक है उसको, तब ही इज़ ऑन द रोड टू फ्रीडम. वो आज़ादी के रास्ते पर, आज़ादी के रास्ते पर आ जाता है. हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड, खुशियों के एंड जहनी सुकून और जहनी सुकून के रास्ते पर आ जाता है. I hope you understood the chapter well. So I'm going to give you some questions related to this chapter.